Hello viewers, this is Jubilee Saikia and you're watching My News Any. Assam MP Gaurav Gogoi today laced Prime Minister Narendra Modi over economic woes. Here we are bringing you the full details. Gaurav Gogoi slams PM Modi over economic woes. Gogoi stated Modi's decision harm farmers, middle class and industries. Gogoi alleges Modi aims to abolish constitutional rights. Government silent on rising fuel and LPG prices. Petrol and diesel prices offer no relief to citizens. Congress committed to restoring constitutional rights envisioned by Ambedkar. Yes, viewers, Assam MP Gaurav Gogoi today slammed at Prime Minister Narendra Modi, accusing him of repeatedly taking decisions that have harmed farmers, the middle class, shopkeepers and industries. Gogoi alleged that the Modi government's sole objective to weaken the constitutional rights of Indian citizens. Pointing to the ongoing economic concern, Gogoi highlighted the government's silence on rising fuel and LPG gases. Gogoi further stated that people have also not received any relief in petrol and diesel prices, adding that the government remains silent on the real issues affecting the country. Stating that the Congress is committed to restoring the constitutional rights envisioned by B.R. Ambedkar, he asserted that party will address the country's economic challenges. He also spoke about growing enthusiasm within the party, particularly in Gujarat, following Rahul Gandhi's recent announcement regarding the 2027 state elections. Highlighting the Congress's focus on economic policy and constitutional values, Gogoi added, "For us, upholding the constitution is not just a slogan, it's a firm commitment, unlike the BJP. Here is what Assam MP Gaurav Gogoi have stated. देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि भारत में लोगों की जो संवैधानिक अधिकार है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, और इसीलिए बार बार वो इस प्रकार के उन्होंने निर्णय लिए, जिस निर्णयों से किसानों को नुकसान हुआ, छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों को नुकसान हुआ, दुकानदारों को नुकसान हुआ, उद्योग को नुकसान हुआ। आज देखिए, जो आर्थिक संकट आई हुई है यूएस टैरिफ्स को लेकर, उस पर उनकी सरकार कितनी चुप है। मध्यम वर्ग पे जो 50 रुपए का गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, उसको लेकर वो चुप है। पेट्रोल और डीजल में कोई भी राहत नहीं लोगों को, आम ग्राहकों को, उसको लेके ये चुप है। तो जो वास्तविक देश के मुद्दे जो हैं उस पर वो जिस प्रकार के नेतृत्व लेना चाहते हैं वो कुछ नहीं करते। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि लोगों की संवैधानिक अधिकार, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की निर्माण किए गए हुए संविधान की सुरक्षा, और जो यहाँ की हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस ढांचे को और हमको सुधारना। नो, आई थिंक देयर इज ट्रेमेंडस एंथुजियाज्म अमंग्स गुजरात कांग्रेस. आई थिंक आफ्टर राहुल गांधी जी announcing that 2027 Gujarat elections is going to be a prime election for the Congress party, and we have committed ourselves to winning this election. I think this AICC plenary session is historic. We have got a lot of support from the Gujarat Congress. So from the Gujarat Congress, I think it's going to go extremely well. And what is also happening, the way we're talking about the economic policies, the constitution, it shows that the constitution for us, unlike what the BJP says, is not a slogan, it is a firm commitment to uphold the constitutional values. देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि भारत में लोगों की जो संवैधानिक अधिकार है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, और इसीलिए बार बार वो इस प्रकार के उन्होंने निर्णय लिए, जिस निर्णयों से किसानों को नुकसान हुआ। That's all for now. For further updates, keep watching My News Any.